जो क्वेश्चंस पूछा जा रहा है उसको छोड़ करके जो मुझे आ रहा है, आई यूज टू राइट दैट एंड दैट वाज मेकिंग ऑल द डिफरेंस बिटवीन टॉपर्स एंड द पर्सन हु इज नॉट क्वालिफाइंग दिस एग्जाम। द फर्स्ट वन इज दैट जो आप कोटेशंस यूज कर रहे हैं, बी इट इन योर एथिक्स पेपर, बी इट इन योर ऑप्शनल और इवन बी इट इन योर जीएस पेपर्स। एक जो एग्जाम का डिमांड कुछ है, क्वेश्चन का डिमांड कुछ है, एंड देन दैट इज यू आर प्रेजेंटिंग अ रैंडम कोड इन अ गिवन नंबर ऑफ वर्ड्स, बिकॉज यूपीएससी इज वेरी मच क्लियर एंड वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट द नंबर ऑफ पेजेस और नंबर ऑफ वर्ड्स इट डिमांड्स फ्रॉम एन एस्पिरेंट। तो उस सेंस में जो साइंस ऑफ आर्टिकुलेशन होता है, कम वर्ड्स में ज्यादा चीजों को बताना, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो वो वाला पार्ट जो होता है कि कंक्लूजन शुड आइडियली बी मैचिंग विद द इंट्रोडक्शन और शुड मैच विद योर क्वेश्चन एज वेल एज इट शुड बी फॉरवर्ड लुकिंग। अगर ये दोनों तीनों चीज अगर उसके दिमाग में रहता है व्हाइल राइटिंग योर कंक्लूजन, देन जो कंक्लूजन के जो मार्क्स रहते हैं, आई थिंक 1 मार्क रहते हैं यूपीएससी में, दैट यू आर बाउंड टू गेट। उसके बाद जस्ट एक लाइन पे वेरी ब्यूटीफुली दैट पर्सन हैज कनेक्टेड दैट जेंडर इक्वलिटी विद अ जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स। नाउ दैट सर्व्स द पर्पस। यही अगर एक लाइन बस आप अगर ऐड कर दे रहे हो ना, देन वो जो होता है ना कि आंसर्स में अपने आप 4 चांद लगना हो जा रहा है। I started my full-fledged preparation after I joined the Ultimate Assessment Program at Civilsdaily. 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 There is a 12-month strategy which I have done on Civilsdaily platform only. I reached out to the Civilsdaily team. Civilsdaily. Current affairs में Civilsdaily. 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 With Civilsdaily. 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 A mentorship program of Civilsdaily, and that did help me a lot. I would want to know, and of course, Sumit would also want to know whether if you started writing answers, are you beginning answer writing? What is the process? Because what we are going to tell right now is, see, one level of answer writing is that you switch from paragraphs to probably a structure where you have points, where you know how a good answer is written, right? But I hope a lot of you are not absolutely beginners in answer writing. I mean, you know that answer writing is not done in paragraph form, right? You have to write in points, you have to add certain value. So at least you have seen how toppers write, what's the style of UPSC answer writing. It's not like college, it's not like that anywhere, right? So this would be a level more than that. Of course, it's not an advanced level, but before you switch to extremely advanced level, it's somewhere in the between where you need to avoid certain things. You need to take care of certain things, at least 8 to 10 8 blind spots we call, that you need to take care of before you jump to advanced level of answer writing, right? So who better than Sumit to tell you about this? Sumit secured All India rank 200 this year. He is getting IPS most probably, and he could not qualify attempts before. In his first attempt, he reached the interview stage. He scored 198. Then the second attempt, he could not clear prelims, so it was a great setback. But he bounced back with great mentorship. He was a part of our Smash Mains program. He was a part of our interview mentorship also. He bounced back, and here he is with All India rank 200. Great to have you here, Sumit. Thanks for taking out your time and joining us at Civilsdaily. Okay, so Sumit, of course, before you tell them the idea of answer writing, tell them why it is important to think about answer writing or have an approach about answer writing to begin with. तो जो फंडामेंटल्स होते हैं आंसर राइटिंग के, इट इज मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि जो डिमांड है क्वेश्चन के वो क्या है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। जैसे वेन एवर यू आर स्टार्टिंग योर आंसर्स, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक बार डिमांड एक बार समझने के बाद देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ यू कैन स्ट्रक्चर योर आंसर्स, मतलब ऐसे टू मेक देम प्रेजेंटेबल टू द एग्जामिनर। वो होता है ना कि यू आर ट्राइंग टू मतलब यू आर trying to prepare a bouquet for the examiner, जहाँ पे you are putting all the good introduction, all the good dimension of the answers, and then you are trying to present all the good flowers in one bouquet and then giving it to the examiner. वो हो जाता है। दूसरा बात हो जाता है कि to understand the demand, तो एक फंडामेंटल चीज मैं अक्रॉस देखा हूँ, मतलब एज अ कैपेसिटी ऑफ मेंटोरशिप और इवन इन माय आंसर राइटिंग इटसेल्फ, दैट व्हेनेवर आई यूज्ड टू राइट, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा हो जाता था कि जो क्वेश्चंस पूछा जा रहा है उसको छोड़ करके जो मुझे आ रहा है, आई यूज टू राइट दैट एंड दैट वाज मेकिंग ऑल द डिफरेंस बिटवीन टॉपर्स एंड द पर्सन हु इज नॉट क्वालिफाइंग दिस एग्जाम। दिस एग्जाम इज वेरी मच पॉइंटेड इन दैट एस्पेक्ट कि जो डिमांड पूछा जा रहा है ना आप वही आंसर करो। इट्स लाइक मोर अबाउट कि प्रीलिम्स में अगर ए ऑप्शन है एंड बी सी डी गलत है, तो ऑब्वियसली यू विल नॉट बी राइटिंग बी सी डी इन योर मेंस आंसर राइटिंग। सेम अप्लाइज हियर एज वेल कि अगर जो पूछा जा रहा है, फॉर एग्जांपल an answer, a question is asking A and B,
एंड देन यू एंड अप राइटिंग ए बी सी डी एंड ई। तो सी डी एंड ई जो है, एक तो वो आपका स्पेस भी खा रहा है, एंड दैट बिकम्स irrelevant. Now as an examiner point of view, understand that if you would have been in that position, then what would have been your reaction? कि यार मैंने तो ए एंड बी पूछा है ना, देन व्हाई आर यू गिविंग मी सी डी एंड ई? तो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. तो वंस यू हैव अंडरस्टूड दैट नुआंसेस ना, एक बार समझ में आने के बाद, देन जो अभी हम लोग फाइनली डिस्कस करने वाले हैं, 8 आंसर राइटिंग ब्लाइंड स्पॉट्स, then that will be very much useful. Also, when you're starting answer writing, you don't have to mimic toppers to begin with. You can't copy paste topper answers. It won't work because you haven't understood what is their structure and what's the process, because that's their advanced level of answers that you're looking at, right? So it's not their beginners answers. So do not mimic that. Start by learning the basics. Start by understanding, as Sumit said, what the examiner wants, right? So Exactly. it's not an easy process. It's not an overnight process, right? It will take time, but it's a craft. It is divided into 3 phases, and that's how you navigate your answer writing route. Sumit, more on this? Yeah, sure. तो जैसे whenever you are starting, तो मेरा एक अप्रोच हमेशा रहा है, whenever I will be starting a new subject, then I'll go through PYQs. This I have done for prelims, this I have done for mains. जैसे for example, if I'm starting say spectrum for modern history, then I'll go and understand कि what are the examiner's point of view, what is UPSC exactly asking. जैसे theme wise questions पूछे जाते हैं, be it civil disobedience movement or quit India movement. Similarly, I'll understand the temperament of the examiner as well. उसके बाद that process, these 3 process will begin, जहाँ पे again the first part of the phase 1 would be understanding the question framing, कि किस टोन में पूछा जा रहा है, whether it is setting the negative tone, positive tone, neutral tone, as well as जो directives होते हैं वो questions को समझने के लिए. For example, there are many questions which comes with discuss, which comes with comment, or which comes with critically analyze this, say this. Now, the moment you are getting that directive, so that becomes the basis on how you are going to structure that answer. तो वो अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन फ्रेमिंग ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. दूसरा बात आपका हो जाता है कि मास्टरिंग द थीम डिमांड अप्रोच. यहाँ पे आई एम श्योर सिविल डेली वालों ने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए कि कैसे आपको थीम एंड डिमांड आइडेंटिफाई करना है टॉपिक बेसिस पे. जैसे थीम कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल इफ द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट इंडो पैसिफिक एंड इंडियाज रोल इन इंडो पैसिफिक, नाउ दैट theme of the question would be Indo-Pacific. Now, anything you have say data related to it, you can take help of the maps related to it. Now, you can also take help of certain India's initiatives for Indo-Pacific region. Now, that becomes your pedigree kind of thing. जो आपके ingredients, जो आपके answer में जाएगा, depending on the demand of the question. तो वो एक बार theme, एक बार when you have understood that theme, then next approach जो होता है वो demand, कि what is question, मतलब what the question is actually asking. तो वो डिमांड समझना, वो डिमांड को फिर कैटर करना, then it becomes paramount importance. उसके बाद फिर जाके once you have understood that demand कि okay, this question is asking India's role about say Indo-Pacific region. Now the next approach would be what is evaluator psychology. मतलब जो क्वेश्चन जो होता है, मोस्टली क्या होता है कि यूपीएससी में क्वेश्चन वुड टेल यू इसेंशियली कि व्हाट इज द डिमांड. क्वेश्चन विल टेल यू कि साइकोलॉजी जो है इवेल्युएटर्स की या फिर एग्जामिनर्स की, वो क्या है, टेम्परामेंट क्या है, वो किस टोन में सेट हो रहा है, वेदर इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, एक्सेट्रा. तो व्हेन यू हैव अंडरस्टूड दैट एग्जामिनर साइकोलॉजी, फिर evaluators के भी psychology, it is somewhat related to the examiner's psychology as well. Now, if the question is say critically analyze India's role in Indo-Pacific region, then obviously you are going to add values to India's role, to what India has already done. Secondly, you are also going to criticize India's role or not taking up the issues proactively, or for example, not criticizing China's interest or China's involvement in Sri Lanka's water. So that aspect you need to highlight. And then ultimately, आपका जो phase 1 का last part होता है, you need to be articulate. It's not like कि आप कुछ भी लिख रहे हैं. अगर इंडो पैसिफिक के ऊपर आया तो आप मतलब कहीं से भी कुछ भी मतलब जो भी आपके पास नॉलेज है आप वो लिख रहे हैं, rather than what is being asked in the question. तो वो articulation होता है ना, that becomes important, जहाँ पे it should be concise, it should be to the point, and every word whatever you are using in your GS paper,
it should be directly hitting to the question. जैसे मेरा I still remember जो मेरा पहला attempt था, I used to just summarize whatever I have written in my conclusion. Now that kind of conclusion serves no purpose because I have already written that. तो वो जो आर्टिकुलेशन होता है ना कि what how you are concluding, how you are introducing a topic in a given number of words, because UPSC is very much clear and very much particular about the number of pages or number of words it demands from an aspirant. तो उस सेंस में जो साइंस ऑफ आर्टिकुलेशन होता है, कम वर्ड्स में ज्यादा चीजों को बताना, that becomes important. I'm sure Saket sir would want to add something in phase 1 part. नो एब्सोल्युटली, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आपको यही समझना है कि पहले क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, एंड द थीम डिमांड अप्रोच दैट सिविल्स डेली टीम इज मेंस टीम इज कंटिन्यूअसली एम्फसाइजिंग ऑन। उसके बाद इवैल्यूएशन के टर्म्स में, क्योंकि आपको उनकी साइकोलॉजी भी समझनी है, ठीक है, एंड दैट्स व्हाट यू हैव सेड, आई हैव नथिंग मोर टू ऐड ऑन दिस। फेज Yeah, 2 में ऑफ कोर्स देन आई थिंक दे हैव टू शिफ्ट टू नोट मेकिंग एज पर मेंस डिमांड, राइट? एंड exactly. फिर आपका Now, स्टेप आता है। हाँ, हाँ प्लीज कंटिन्यू। नाउ नोट मेकिंग में क्या होता है कि मोस्टली मेरे पास जो नोट्स होते थे, इट यूज टू बी वन पेजर नोट्स, कोई भी टॉपिक्स के या फिर कोई भी सब्जेक्ट्स के। फॉर एग्जांपल, इफ द टॉपिक इज अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, नाउ वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड देयर आर सो मेनी थिंग्स। एसएचजी हो गया, तुम्हारा पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे हो गया, एनसीआरबी के रिपोर्ट्स हो गए, वुमेन इन से वुमेन गेटिंग माइक्रो फाइनेंसिस फैसिलिटीज, वुमेन का इन्वॉल्वमेंट इन से एनजीओस, how women led development initiative is being taken up by the government. Now that should be there in your one pager notes. मुझे अभी भी याद है कि I was going through श्रुति शर्मा मैम के copies, and then I got the idea कि whenever a topic is arriving, जो भी पूछा जाता है, whenever a topic is being asked, so she used to have all the facts, all the data, all the committee related to that topic in one page. Now it becomes important when you revise properly. It becomes important when you are going to say write your answers. उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके नोट मेकिंग होता है, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। अगेन एक छोटा और एस्पेक्ट है, यूपीएससी हैज गिवन सिलेबस ऑफ ऑल द जीएस पेपर्स एंड इनफैक्ट ऑप्शनल एज वेल, जहाँ पे मेरा ये अप्रोच रहता था कि वन टॉपिक विल टेक नॉट मोर देन 1 or 1.5 पेज। इफ द टॉपिक इज से सिटीजन चार्टर, then I'll write each and everything whatever is related to the with the citizen charters, be its definition, be its data, be its best practices, be it India's के जो point of view से है best practices वो, या फिर small में ही कि क्या अभी deficiency है citizen charter में, and then fast forward going forward कि best practices क्या है, जैसे India's का I think कुछ बिलासपुर मॉडल है etc. तो उस point of view से when you have understood the whole puzzle of making your notes as per the mains perspective, then you are ready to do your answer writing. Then we are entering into the phase third of our answer writing. Exactly. So phase third, जो पहला पार्ट होता है, now you have understood the theme demand approach, you have understood the psychology of the examiner, you have understood the note making process. Now आपको खुद के आंसर्स को और अच्छा करना है, आप जो खुद लिख रहे हैं उसको और बेटर करना है। वो बेटर कैसे होगा? Now understand कि I keep telling this to many aspirants that most of the times जो यूपीएससी का प्रिपरेशन है, इट्स वेरी मतलब हाईली कस्टमाइज्ड। यूपीएससी विल रिवॉर्ड इनोवेटिव अप्रोच, यूपीएससी विल रिवॉर्ड थोड़ा जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होता है। तो वहां पे यू नीड टू कीप योर ओन आंसर राइटिंग का जो स्ट्रेंथ होता है इन योर ओन सेल्फ, एंड देन एड सम वैल्यूज टू योर आंसर्स, टू योर स्टाइल ऑफ राइटिंग। देन वो कहाँ से आएगा? वो आपके टॉपर्स कॉपीज से आएंगे। For example, I used to go through lots of toppers copies, जहाँ पे I used to understand कि क्या toppers के point of view हैं, how they are catering to the demand of the question, how they are also understanding the implicit demand of the questions, and then how they are writing it. तो उस sense में ना analysis of toppers copy becomes very important. There are many toppers जो अभी मतलब है, I think freely available होता है notes इस पे इंटरनेट पे. You can search their name, you can search their copies, and then understand कि from where they are coming from. Then you will be able to analyze and then add values to your answers. Secondly, जो X Factor के जो notes हैं Civilsdaily के, I used to take some hints from their own notes, जहाँ पे I used to take only मतलब जो होता है ना कि best practices वाला part, यानी तो कुछ ऐसा value addition which is ground breaking. For example, STEM से related अगर कुछ data है which was missing in my answer, I used to take it from X Factor के notes, and then I used to add that X Factor के notes in my own notes. तो वो value addition भी होता चला गया, and once you keep revising the same,
then you keep improvising on the same. And lastly, it is more about learning from peers. I was fortunate to have a good set of groups जहाँ पे मैं I used to send my copy to say my friends who used to evaluate, if not on a daily basis but at least on a weekly basis. तो उस सेंस में भी वो जो होता है ना कि they were also providing some kind of input to my answers, and वो जो छोटा छोटा nuances होता है and how you can improvise on the same, वो value additions होता चला गया. And lastly, uh, today here I am जहाँ पे मतलब we are discussing your own answer writing. Absolutely. So these are the three phases which I would absolutely agree with Sumit. So as we said that before you start your answer writing, before you're moving towards advanced level answer writing, these are the 8 blind spots we have identified for you, जो आपको ठीक करने ही पड़ेंगे. ठीक है, इसके बिना ये आप करोगे, इसको अगर इग्नोर कर दोगे तो आपके आंसर कभी परफेक्ट होंगे ही नहीं, आप एडवांस लेवल पे जाओगे ही नहीं. सो इस पूरे वेबिनार, पूरे सेशन में व्हाट विल बी डूइंग, विल बी डिस्कसिंग ईच ऑफ दीज पॉइंटर्स इन ग्रेट डिटेल. Sumit, of course, you can tell something about these points. Then we discuss each of them in great detail. Yeah, exactly. So just to tell you briefly about what 8 writing blind spots I have identified with the Civilsdaily team. The first one is that जो आप quotations use कर रहे हैं, be it in your ethics paper, be it in your optional, or even be it in your GS papers, जो एग्जाम का डिमांड कुछ है, क्वेश्चन का डिमांड कुछ है, एंड देन दैट इज यू आर प्रेजेंटिंग अ रैंडम कोट. आई स्टिल रिमेम्बर कि एक गांधी का कुछ कोटेशन था एजुकेशन पे. आई वाज गोइंग थ्रू द कॉपीज एंड देन सम रैंडम कोटेशन अबाउट एजुकेशन केम अप. सो आई वाज मतलब इतना वो ऑफ हो जाता है कि द क्वेश्चन कुछ पूछा जा रहा है और आप आंसर कुछ कर रहे हैं. मतलब इट इज मोर लाइक कि आपको जो आता है बस आपको भरना है, जस्ट जस्ट सो यू साउंड थोड़ा सा एकेडमिक. तो उस सेंस में दैट quotations not related to the question will put the examiner or will put the evaluator off the mark. तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना पड़ेगा कि दैट कोटेशन शुड बी रिलेटेड टू द क्वेश्चन. सेकेंडली, डेफिनेशंस यार वही एक पूरा, फॉर एग्जांपल इथिक्स में ये बहुत होता है कि द क्वेश्चन इज अबाउट से सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ऑब्जेक्टिविटी और एम्पिरिकल डाटा जो बेसिस होता है उस पर, एंड देन यू हैव जस्ट चूज वन वर्ड से इंटीग्रिटी, एंड देन यू हैव डिफाइंड इंटीग्रिटी विदाउट इवन गिविंग द कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग टू द क्वेश्चन. तो वो भी अगेन इट बिकम्स थोड़ा सा ओवरडू करना हो गया कि आपको, ठीक है डेफिनेशन वाज इंपॉर्टेंट बट डेफिनेशन इतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था कि वो ग्राउंड ब्रेकिंग होगा दैट विल फेच यू सम गुड मार्क्स. तो उस पॉइंट में दैट इज मोर अबाउट कि ओवर एम्फेसाइजिंग ऑन द डेफिनेशनल एस्पेक्ट. थर्डली, इट इज मोर अबाउट कि कंक्लूजन में आपको समराइज करना है, आपको एक पॉइंट्स देना है, आपको एग्जामिनर को सरप्राइज नहीं करना है कि अरे ये कौन सा नया पॉइंट आ गया. ठीक है, तो मोस्टली ऐसा होता है कि conclusion always used to be forward looking. Conclusion cannot give a new example, new points or new arguments, because understand you have written whatever you had to write in your answers. जो बॉडी वाला पार्ट होता है, आप 2 पेज लिखने के बाद कंक्लूजन में इफ यू आर एडिंग सम न्यू डायमेंशन टू योर आंसर देन इट इज नॉट गोइंग टू सर्व एनी पर्पस. मोस्टली कंक्लूजन इज ऑल अबाउट फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन. जैसे अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है कि हाउ सिविल सर्विसेज कैन इम्प्रोवाइज ऑन देयर सर्विस डिलीवरी प्रोसेस, देन माय कंक्लूजन यूज्ड टू बी लाइक कि सर्वोदय और अंत्योदय तभी पॉसिबल होगा जब सिविल सर्विसेज अच्छे से वर्क करेगी, जब सिविल सर्विसेज अच्छे से फंक्शन करेगी. नाउ दैट इज अ काइंड ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग कि हाँ ठीक है, आई हैव अ सेट गोल इन माय माइंड एंड वंस द पब्लिक सर्विसेज और सिविल सर्विसेज विल इंप्रूव एंड देन ऑटोमेटिकली वी आर गोइंग टू रीच दैट गोल. और अगर उसी को मैं कुछ नया उसी में ऐड कर दूं विच सर्व्स नो पर्पस, देन इट बिकम्स मतलब कोई फायदा नहीं होता है उसमें. फिर फोर्थली जो होते हैं एग्जाम्पल्स होते हैं, मोस्टली होते हैं कि अभी एक ट्रेंड चला हुआ है स्पेशली आफ्टर श्रुति शर्मा मैम के बाद कि पीपल आर गिविंग पॉइंट एग्जाम्पल. नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू आर एस्टेब्लिशिंग अ पॉइंट जहां पे यू आर, फॉर एग्जाम्पल यू आर टेलिंग कि हाउ देर इज डेफिशिएंसी इन द वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन से पंचायत लेवल. ठीक है, आप वो पॉइंट आप दे दियो एंड नाउ यूर एग्जाम्पल जो है आप एनसीआरबी का डाटा कोट कर रहे हो कि वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस कितना हो रहा है. सो अंडरस्टैंड कि एक पंचायत लेवल का पार्टिसिपेशन में आप पॉइंट बना रहे हो और एग्जाम्पल कुछ वायलेंस का दे रहे हैं, देन इट सर्व्स नो पर्पस क्योंकि कोई मैच ही नहीं कर रहा है. इट विल एड मोर कंफ्यूजन टू द एग्जामिनर्स माइंड. तो उस सेंस में क्या होता है कि जो आपका एग्जाम्पल्स होते हैं इट शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द पॉइंट विच यू हैव ऑलरेडी मेड. अगेन एक्सेसिव वर्बोसिटी को अवॉइड करना है.
एक जो भी होता है कि वॉट एवर यू आर राइटिंग, जो 150 वर्ड्स 200 वर्ड्स होते हैं, इट शुड एड सम काइंड ऑफ वैल्यू टू द आंसर। इफ तुम ये प्रैक्टिस हमेशा सिमुलेशन में आई यूज टू डू, वेन एवर आई यूज टू एंड अप राइटिंग माई आंसर्स, तो मैं 5 मिनट तक अपने आंसर्स को इवेल्युएट करता था और मैं सोचता था कि ठीक है यार, एक लाइन जो ये मैंने लिखा है या 2 पॉइंट जो मैंने लिखा है, इज इट एडिंग सम अमाउंट ऑफ वैल्यू टू माई क्वेश्चन, टू माई आंसर? इफ नॉट, देन आई यूज टू चेक दैट। तो वो ना प्रोसेस तो जो थोड़ा होता है ना सेल्फ इवेल्युएशन वाला प्रोसेस है, वो आपको खुद भी करना पड़ेगा। सिक्स्थ वाला हो जाता है कि जो इरेलीवेंट और कॉन्ट्रोवर्शियल इंफॉर्मेशन है वो, फॉर एग्जाम्पल अगर जब तक सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अच्छे से कोई चीज पे जजमेंट नहीं दिया है, फॉर एग्जाम्पल, देन यू शुड नॉट बी राइटिंग एनीथिंग controversial which does not suit the need and demand of the UPSC। फॉर एग्जाम्पल अभी जस्टिस वर्मा कमेटी, सॉरी जस्टिस वर्मा के ऊपर जो केसेस वगैरह सब आए हैं, अगेन ऑफ एंड टाइम्स आई हैव सीन स्टूडेंट्स राइटिंग कि डायरेक्टली वो अपना ही जजमेंट सुना रहे हैं। अंडरस्टैंड कि अभी केस का पूरा फाइनल जजमेंट आया भी नहीं है, इट इज स्टिल पेंडिंग, है ना? तो आपको वो सब जो कॉन्ट्रोवर्शियल रिमार्क होता है उससे आपको बच के रहना है, बिकॉज यूपीएससी डज नॉट लाइक एनी कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग्स इन देयर ओन कॉपीज। सेवेंथ वाला पार्ट हो जाता है कि जो सुपरफ्लुअस थिंग्स हो गई, कि अभी मैं दिखाऊंगा एक दो एग्जांपल मेरे खुद के भी पेपर में, विच वाज नॉट एडिंग एनी काइंड ऑफ वैल्यू टू द ऑलरेडी आस्क्ड क्वेश्चन। तो वो सुपरफ्लुअस इंट्रोडक्शन से थोड़ा अपने को अवॉइड करना है। एंड लास्टली जो होता है कि वही वाला पार्ट हो गया, यू आर ट्राइंग टू प्रेजेंट अ बुके टू द एग्जामिनर, जहां पे इफ द एग्जामिनर इज आस्किंग फॉर 2-3 flowers and then you are not catering to the demand of the examiner, you are only giving say 1 flower to the examiner, then obviously the examiner will not be liking it। तो आपको तीनों का तीनों डिमांड फुलफिल करना है। उसी सेंस में हो जाता है कि आपको जो भी सब पार्ट्स होते हैं, जो भी इम्प्लिसिट डिमांड होते हैं, सबको एड्रेस करते हुए आगे बढ़ना है, एंड देन ओनली योर आंसर वुड सर्व द पर्पस। Right. So, as the first point said, using a quote without, a 360-degree approach, आप randomly डाल दे रहे हो quote को, but you don't know कि कैसे that quote is eliminating the question। ठीक है? तो सुमित, more on this, yeah। एग्जैक्टली। एंड दूसरा एक पार्ट हो जाता है ना कि वेन एवर यू आर राइटिंग अ कोड, either it should be self-explanatory, and if it is not self-explanatory, then you should be adding some connecting para to the same, कि कुछ एक connecting lines होने चाहिए which should directly be hitting to the demand of the question। Now in this question, जो question number 1 है, it is about examine the parallels between the governance system of ancient Indian republics with examples and the principles of democratic गवर्नेंस इन मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया। नाउ आप जो लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे होगे स्क्रीन के, दैट पर्सन हैज रैंडमली स्टार्टेड विद नेहरू सेट। कैन यू जस्ट जूम इट अ लिटिल? या नाउ इट्स विजिबल, थैंक यू। नाउ ये जो है नेहरू वाला जो पार्ट है, इट इज मतलब वो जो जो आंसर है वो दे हैव जस्ट स्टार्टेड रैंडमली, कि हाउ नेहरू एक बोले थे कि इंडियन सोसाइटी इज अ मैन्युस्क्रिप्ट शोइंग कंटिन्यूटी बिटवीन एवरी एरा ऑफ सिविलाइजेशन, द सेम कैन बी सीन इन द गवर्नेंस सिस्टम। नाउ आप वो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और ये कोटेशन क्या है। अगेन कोटेशन का कोई कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, कोई कनेक्टिंग पैराग्राफ भी नहीं है। नाउ इफ यू मूव टू द राइट साइड ऑफ द क्वेश्चन पेपर, which is about again, मतलब now this has the person has started with our honorable prime minister Modi ka quote, India is not just the world's largest democracy but also mother of democracy, and then he has the person has connected that quotation with the example, with the question, that drawing evidence of existence of proto forms of democracy and republicanism in ancient India, which were known as ganas or sanghas. Now that is actually serving the demand of the question first. Secondly, the person has beautifully added some kind of examples to it विच सर्व्स द पर्पस। आप इंट्रोडक्शन के बाद भी एग्जांपल्स यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई थिंक 2024 में क्लाउड बर्स्ट के ऊपर क्वेश्चन आया था, तो आफ्टर गिविंग द डेफिनेशन आई रोट चमोली ग्लेशियर का वो, फिर जाके जो सिक्किम में जो था उसका मैंने एक दो एग्जांपल लिख दिया था इंट्रोडक्शन में। तो द एग्जामिनर वुड नो दैट ओके यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक प्रॉपर्ली, एंड देन यू हैव मूव्ड अहेड विद द फॉर एग्जांपल कोट, या फिर जो कोट का जो कनेक्टिंग पैराग्राफ है वो। आई थिंक वी कैन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। राइट। सिमिलरली द सेम थिंग अगर आप राइट हैंड साइड में देखोगे तो पूरा 360 डिग्री उसका नीड है, एंड वर्सेस आप लेफ्ट साइड में देखोगे, राइट? सो सेम ही चीज है, इट्स अ रिपीटिशन। एग्जैक्टली। Then the second thing is you should know how and when to incorporate the diagram, right? It will, आपको पता है that it will multiply,
right? It acts as a multipliers for your marks, but only when it supplies the relevant information, right? आप सिंपल बनाइए, आप एरो बनाइए, आप शो कॉस्ट चेन दिखाइए, ठीक है। सुमित, आप इस पे और एग्जैक्टली। बताइए। हाँ हाँ। I'll तो zoom in. आप अंडरस्टैंड कि आप जो डायग्राम जो ऐड कर रहे हैं, इट शुड एड सम काइंड ऑफ वैल्यू टू योर आंसर्स, है ना। आपका जो मेन इंग्रेडिएंट्स रहेगा, पॉइंट एग्जांपल वो रहेगा ही। बट उसके बाद डायग्राम थोड़ा ना, जो मोनोटोनिटी जो होती है, वो जो मोनोटोनस जो होता है, समटाइम्स इट कैन ब्रेक दैट मोनोटोनस प्रॉपर, मतलब जो चैनल होता है एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ठीक है पॉइंट एग्जांपल दे रहा है एंड सडनली यू आर कमिंग अप विद सम इनोवेटिव डायग्राम्स और विद सम इनोवेटिव मैप्स, ठीक है, या फिर कुछ वेन डायग्राम एक्सेट्रा। हब एंड स्पोक मॉडल वाज माय गो टू पॉइंट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचो कि आपको एक दो डायग्राम यूज करना है। नाउ इन टू पेजर आंसर यू आर यूजिंग 4-5 डायग्राम्स ओनली, तो दैट डज नॉट सर्व द पर्पस, राइट। आपको पॉइंट्स भी तो लिखने हैं, आपको एग्जांपल्स भी तो लिखने हैं। टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड, इसेंशियली ये तो कोटेशन दिया ही हुआ है। और उसके बाद आप फिर रैंडम डायग्राम यूज कर रहे हैं, जहाँ पे आप एक ही क्वेश्चन में 3-4 डायग्राम यूज कर रहे हैं, तो फिर एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन वो पक जाएगा यार, कि यार मुझे पॉइंट्स दो ना, मुझे जो मेन होता है वो दो। आप कुछ ऐसे, मतलब वही बुके वाले एग्जाम्पल, आई कीप गोइंग गोइंग बैक। अगर आपको ऐड ही करना है तो एक दो एक्स्ट्रा फ्लावर ऐड कर दो, ये नहीं कि जो एक्स्ट्रा फ्लावर है आप वही चला रहे हो, जो मेन फ्लावर है उसको आप छोड़ ही रहे हो। तो दो, जो मेन फ्लावर है उसको रखना है, और एक आध दो एग्जांपल्स, एक आध दो डायग्राम यूज करना है, मोस्टली हब एंड स्पोक मॉडल, या फिर आपको जो सूट करता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वॉट एवर यू वांट टू गो फॉरवर्ड। तो यहाँ पे भी आप एग्जांपल देख रहे होंगे ऑब्वियसली। पेपर जो राइट हैंड साइड में है, दिस बिकम्स मोर ब्यूटिफुल एज वेल एज दिस सर्व्स पर्पस ऑफ द डायग्राम इन अ मच मोर बेटर सेंस, rather than incorporating डायग्राम randomly 3-4 बार। तो आपको वो अवॉइड करके एक मिनिमम नंबर ऑफ डायग्राम के साथ आगे बढ़ना है। शो कॉज इफेक्ट दिखाइए, सिंपल एरोज यूज करो, बॉक्स यूज करो, आपको बहुत फैंसी कुछ नहीं बनाना है। Similarly वही है, repetition of that. Then I think it's the third blind spot would be when you overemphasize a lot on introduction, Sumit, without actually providing Exactly. context. Yes. Exactly. So the question is about, in order to achieve gender equality, what policies measures are necessary to be taken at the grassroots level? At the grassroots level आपको जेंडर इक्वलिटी के बारे में है, और फिर ग्रासरूट लेवल के बारे में है। नाउ जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो क्वेश्चन है, वुमेन फ्रॉम वॉम टू टॉम फेस इशूज एज डिस्क्रिमिनेशन, जो भी है, लो सोशल मोबिलिटी एंड सोशल एक्सक्लूजन। नाउ आप फंडामेंटली सोचो कि दिस कोटेशन या फिर जो ये लाइन है इंट्रोडक्शन का, इज इट सर्विंग एनी काइंड ऑफ पर्पस टू द क्वेश्चन विच इज बीइंग आस्क्ड। जेंडर इक्वलिटी की बात की गई है, ग्रासरूट लेवल की बात की गई है, और कैसे उसको इम्प्रूव करना है। अब वॉर्म टू टॉम उसको अच्छा लगा होगा, या फिर द पर्सन, वही बात है ना कि मैं आई कीप ऑन रीइटरेटिंग द सेम थिंग, कि आपको जो आता है वो नहीं लिखना है, जो क्वेश्चन है वो लिखना है। क्वेश्चन वाज अबाउट कि जेंडर इक्वलिटी कैसे अचीव करना है। आप पहले ही कॉन्टेक्स्ट दे रहे हो कि यार ऐसा ऐसा हो रहा है, यार ऐसा हो रहा है, ठीक है, अंडरस्टूड, आई कैन अंडरस्टैंड दैट इमोशन बिहाइंड द सेम, but that is not what is being asked in the question. Whereas when you look at the right side of the paper, then the person is directly hitting कि gender equality क्या है, उसके बारे में बता दिया गया है। उसके बाद जस्ट एक लाइन पे very beautifully that person has connected that gender equality with a gender inequality index. Now that serves the purpose। यही अगर एक एक लाइन बस आप अगर ऐड कर दे रहे हो ना, देन वो जो होता है ना कि आंसर्स में अपने आप चार चांद लगना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है कि नाउ इट इज सर्विंग द पर्पस। नाउ एग्जामिनर विल आल्सो लाइक इट एंड दैट पर्सन विल मूव फॉरवर्ड विद द सेम। करेक्ट। सो एज ही सेड, आप इंट्रोडक्शन को बिल्कुल डिमांड के मुताबिक बनाइए, नो मैटर आपके पास कितना भी अच्छा कोड है, अगर वो डिमांड सर्व नहीं कर रहा है देन देयर इज नो पॉइंट, राइट। देन एग्जैक्टली। the thing about conclusion, as Sumit also said that it should summarize and not surprise. तो ये बहुत important है, that conclusion should have new arguments and new points. Sumit, more on this, yeah. या सेम अगेन यही था क्वेश्चन जेंडर इनइक्वलिटी पे। उसके बाद फिर जाके आप ओके, सो हाँ, तो जो जेंडर इनइक्वलिटी पे भी बात हो गई है, देन Yeah. आइडियली माय कंक्लूजन वुड हैव बीन एसडीजी के गोल से रिलेटेड, कि कैसे एसडीजी गोल से हम लोग जेंडर इक्वलिटी को मूव कर सकते हैं, एंड देन वी कैन कम अप विद समथिंग। एंड देन सिमिलरली आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड पे ये नया आर्ग्यूमेंट फ्रेम करके आया है कि हेंस एमएफ आईएमएफ नोट्स
that women's longer participation will lead to 27% of India's, ठीक है, that is the point. बट मोस्टली क्या होता है ना कि वो वाला पॉइंट इट शुड हैव कम आउट इन योर बॉडी पार्ट इटसेल्फ. फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए था कि हाउ जेंडर इक्वलिटी एंड इंडिया इज टेकिंग स्ट्राइड इन द सेम, एंड देन अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू फुलफिल आवर ओन एसडीजी गोल्स का प्रैक्टिस. या फिर अगर कोई कोटेशंस हैं जहाँ पे वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात की गई है, जहाँ पे जेंडर इक्वलिटी को एम्फोसाइज किया गया है, वो कोटेशन से आप अगर एंड करोगे देन इट सर्व्स द पर्पस. आई थिंक राइट हैंड साइड में भी आप अगर देखोगे तो इस पे लिखा हुआ है कि कैसे अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, एंड देन अगेन इट is going to serve gender equality at the grassroots level. Now, this is forward-looking conclusion. This is how you need to write, and this is how you need to train your mind. First, जो आपके राइट हैंड साइड वाले हैं, जो आंसर है, इनके जो कंक्लूजन है, इट इज डायरेक्टली मीटिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. कोई ऐसे रैंडम नहीं है. इट इज मोर अबाउट कि ग्रासरूट लेवल पे कैसे इम्प्रूव inculcation of women can improve the gender equality. तो वो वाला पार्ट जो होता है कि conclusion should ideally be matching with the introduction or should match with your question, as well as it should be forward looking. अगर ये दोनों तीनों चीज अगर आपके दिमाग में रहता है while writing your conclusion, then जो conclusion के जो मार्क्स रहते हैं, आई थिंक 1 मार्क रहते हैं यूपीएससी में, that you are bound to get. Absolutely. Either it has to be a balanced takeaway or a forward-looking suggestion, right? Which is what the right-hand side answer is also emphasizing. You can see this. तो ये चीज लेफ्ट हैंड साइड वाले के पास बहुत डेटा है, बहुत कोट है, बट अगर उसको ढंग से यूज नहीं किया जा रहा है देन देयर इज नो पॉइंट, उनको मार्क्स ही नहीं मिलेंगे, राइट? सो दिस इज व्हाट वी वांट टू टेल यू. आप जब एडवांस लेवल पे जा रहे हो आपको ये सब दिक्कत आएगी. आप हो सकता है बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो, आपको बहुत कुछ पता है, एंड यू जस्ट स्टार्ट राइटिंग. वूम से टूम वाले का कितना अच्छा दिमाग है, उसने सोचा होगा कि मैं लगा देता हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है, बट वो सर्व नहीं कर रहा ना डिमांड. कंक्लूजन में अगर आप ये सब नहीं फॉरवर्ड लुकिंग जाओगे तो कोई फायदा नहीं है, राइट? ये वाली चीज है. सो आई थिंक सुमित, एक ये इस इतने पॉइंट्स पे एग्जाम्पल है, एक आईपीएस ने लिखा था, तो आई थिंक ये होना चाहिए आई गेस एक आंसर में with respect to answer writing. Before we move to other blind spots, this is how probably जहाँ पे आपके आर्ग्यूमेंट फॉर भी हैं, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट भी हैं, बोथ साइड्स हैं, इंट्रोडक्शन है, डायग्राम है, कंक्लूजन है. दैट्स एग्जैक्टली हाउ एन आइडियल आंसर शुड लुक लाइक, राइट? एग्जैक्टली. आप अगर देखोगे ये वाले क्वेश्चन में भी, आप एक और क्वेश्चन पढ़ना, उसके साथ साथ द पर्सन हैज स्टार्टेड विद टेलियोलॉजिकल अप्रोच एज वेल एज डियोंटोलॉजिकल अप्रोच, विच इज डायरेक्टली हिट इनटू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन की मोरालिटी ऑफ एक्शंस, मीन्स, एंड क्या क्या है. वही दोनों पॉइंट हैं जो आपने पढ़ा होगा. मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि आप पढ़ते हैं बट उसको यूज नहीं कर पाते हैं. बट दिस पर्सन हैज डायरेक्टली यूज्ड ऑल द थ्योरी इन द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ, कि दैट इज सर्विंग द पर्पस. Now, arguments in favor, arguments against, and then he has bifurcated the part जहाँ पे morality by outcome and morality by intrinsic nature दोनों को differentiate किया गया है, और फिर उसी के हिसाब से arguments in favor and arguments against दिया गया. Now, in conclusion also, he has highlighted how, again, ये Venn diagram वाला जो process होता था, that I was using very much in my own answers, जहाँ पे I used to use them. For example, an officer should be both uh, an officer should have both compassionate value as well as integrity. नाउ आई यूज टू हाईलाइट ऐसे इवेंट डायग्राम में कि कंपैशनेट का एक अलग गोल होना चाहिए था, मतलब सर्कल होना चाहिए था, और इंटीग्रिटी का एक अलग सर्कल होना चाहिए था, जो इंटरसेक्शन होता है. तो जो आइडियल ऑफिसर होते हैं, दैट पर्सन शुड हैव अ मिक्स ऑफ बोथ द क्वालिटी. नाउ द पर्सन हैज डन द सेम थिंग इन हिज ओन आंसर राइटिंग, जहाँ पे ही हैज कंक्लूडेड विद अ वेन डायग्राम highlighting how the middle path or the golden mean is going to be a way forward. Now, this is a very ideal looking answer, and this you need to go through. I'm sure, I think slides मिलेंगे ना बच्चों को. हाँ मिल हाँ, जाएगा. स्टूडेंट्स को आई थिंक मिलेंगे. देन you guys can go through and then can understand कि how the small nuances can help you going a long way in order to improve on your answers. Correct. So the next blind spot has to be hitting the bullseye, right? You can't write examples or off targeted examples. ठीक है, वेग और अनरिलेटेड केसेस आप नहीं डाल सकते हो. आपको केस स्टडी या डेटा कुछ भी जो भी डालना है, that should be exactly what the question is asking. So hitting the bullseye. Sumit, yeah, I think this Exactly. should be. एग्जैक्टली. तो ये मेरे साथ ना फर्स्ट अटेम्प्ट में होता था.
जब मैं ऐसे लिखता था तो माय इंट्रोडक्शन जो होता था एनेक्डोट का, इट यूज टू बी 2 पेज 3 पेज। आई केप्ट ऑन गोइंग ऑन एंड ऑन। इंट्रोडक्शन ही मेरा चल रहा है, वो स्टोरी जो मैंने वीव करना है जो टॉपिक से, वो मैं वीव करते करते फिर वो होता है नहीं कि बह जाना। लिखना था मुझे 2 पैराग्राफ में, आई एंडेड अप राइटिंग इन 3 पेजेस। नाउ इट सर्व्स नो वैल्यू टू माय ओन एसे राइटिंग, कि 3 पेज में मैं स्टोरी ही सुना रहा हूँ। तो फिर मेरा पॉइंट कहाँ है, मेरा कुछ अपना क्रिएटिव इनोवेशन पॉइंट्स कहाँ है, वो मिसिंग लगेगा। तो वही सेम यहाँ पे भी द पर्सन हैज डन इट, कि जहाँ पे द पर्सन हैज स्टार्टेड द रामायण, फिर हनुमान के बारे में, हनुमान जी के बारे में, एंड देन द पर्सन वेंट ऑन एंड ऑन कि महाभारत में फिर क्या हुआ। नाउ अंडरस्टैंड कि आपको 2 पैराग्राफ में अपने पॉइंट समझा के आगे निकलने हैं। एग्जाम्पल्स का ये मतलब नहीं है कि आप एग्जाम्पल्स लिखते ही चले जाओ। मेनी ऑफ द टाइम्स ऐसा भी होता है कि लोग एक एक पेज का एग्जाम्पल से लिख रहे हैं। महात्मा गांधी के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन था, नन कोऑपरेशन में क्या कंट्रीब्यूशन था, फिर चंपारण अहमदाबाद एक्सेट्रा में क्या कंट्रीब्यूशन था। नाउ आफ्टर अ पॉइंट ऑफ आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इट इज नॉट गोइंग टू सर्व एनी काइंड ऑफ वैल्यू टू योर ओन आंसर्स। तो उस पॉइंट पे यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड कि you need to stop first, and secondly, your examples whatever you are using, it should be very much concise and to the point. The moment you are using example to the point, then again you are hitting the bullseye, and then the examiner will get impressed, and then accordingly you are going to get rewarded for the same. Absolutely. So the next I think is very important. You have to avoid verbose. You can't be doing that. And overemphasis on definition can't happen, right? Yeah. Exactly. So this यहाँ पे आई थिंक जो लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन है, सेम चीज किया गया है, टू वर्बोस एंड ओवर एम्फेसिस ऑन द डेफिनेशन पार्ट। यहाँ पे भी द डिबेट ऑन मीन्स एंड एंड, द पर्सन केप्ट ऑन गोइंग कि मीन्स एंड एंड क्या है, क्या फिलोसफर्स बोलते हैं, फिलोसफर्स के नाम भी डाल दिए हैं। बट जो मुझे कॉन्क्रीट आइडिया था कि एक्चुअली में जो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है वो क्या है, वो फुलफिल ही नहीं हो रहा है। वो हो जाता है ना कि इट इज मोर अबाउट, एंड आई एम श्योर I'm not going to offend any PSI student, but the left hand side seems like a PSI student का paper जहाँ पे he must have read something in his own options and then put on all the knowledge which he has gained in his option. तो वो भी नहीं करना है। You need to be concise, you need to be to the point. Secondly, आपका most of the times ऐसा होना चाहिए कि your answers should be जो introduction part होता है वो point wise होना चाहिए। गया वो टाइम जहाँ पे आप मतलब ऐसे पैराग्राफ में लिख रहे हैं। आई मीन through the toppers copy of recent times, most of the toppers have written their answers in a point-wise system. So it's better to stick to the point-wise system, unless ki you have mastered the art of writing your answers in paragraphs. And if you have not, then conventional side se jana is much better. जहाँ पे you are writing your points upfront and then giving contextual example to the same. तो वो वाला भी approach I think is much better than writing your answers in a paragraph manner. right. Then I think it's about adding unnecessary politics or controversial things. Yeah, without understanding your dimensions. Go ahead. Exactly, exactly. नाउ अगेन वही कंट्रोवर्शियल चीजें थोड़ी अवॉइड करना है, जितना आंसर को सेंट्रिस्ट, जितना आंसर को न्यूट्रल बनाना है। बिकॉज आप अगर टोन ऑफ द क्वेश्चंस देखेंगे तो मोस्टली जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस होते हैं वो लोग यूपीएससी पूछते ही नहीं है। बट इफ यू वांट कि आपको मार्क्स कम मिले तो यू कैन स्टिल ऐड सम काइंड ऑफ स्पाइस टू योर आंसर्स, कि सम काइंड ऑफ कंट्रोवर्शियल थिंग्स टू योर आंसर्स, जस्ट टू गेट लेस मार्क्स देन व्हाट यू एक्चुअली डिजर्व। क्योंकि वैसे टाइप के क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट एंड पार्लियामेंट का टसल हमेशा पूछा जाएगा, कुछ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के फैलिसीज हमेशा पूछा जाएगा। दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी मच स्टैंडर्ड एंड यूपीएससी कीप्स रिपीटिंग इट्स ओन थीम्स। तो वो आपको समझना पड़ेगा कि यू नीड टू बी साउंड वेरी न्यूट्रल। ना यहाँ पे भी फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3 में जो है, आर्बिट्रेरी यूज ऑफ लॉ enforcement agencies by the state needs regulation to avoid detrimental cost to the functioning of democracy, substantiate with the help of recent events. Recent event में भी आपको मोस्टली, तो मेरा ये अप्रोच रहता था, if I use some controversial example then I would be writing it is alleged and not it has happened, और मतलब ऐसा directly not tarnishing the image of the institution, or rather critics have said this and this.
तो यहाँ पे द पर्सन इज, जो लेफ्ट हैंड साइड में द पर्सन हैज स्टार्टेड विद लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एंड केस्ड पैरेंट. अगेन केस्ड पैरेंट सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं यू हैव दैट एक्टिविस्ट माइंडसेट. अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रिएट्रेशन, केस्ड पैरेंट समझ में आता है कि सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन दैट कोर्ट, बट अगेन इफ यू कैन अवॉइड इट देन अवॉइड इट. I mean, उसके also अलावा यू at विल this हैव. point, arbitrary use of law enforcement agencies. These pointers Exactly. actually shows. So these might be very valid, but you can't write that as a bureaucrat. Understand this. They are not looking for somebody who's into journalism or who is into law or who is into academics. They want a bureaucrat. And look at the tone of these pointers, right? So you would understand Exactly. this. AFSPA in आप with the देखो, consent of हाँ, टारगेट्स ऑपोजिशन लिख रहे हैं, target ऑलरेडी opposition. बर्डन ऑर्गेनाइजेशन. दिख रहा है कि द पर्सन लीनिंग जो होता है, जो आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो दिख रहा है. दैट शुड नॉट गेट रिफ्लेक्टेड इन योर आंसर्स. मतलब आई कैन हैव माई ओन आइडियोलॉजी, आई कैन हैव माई ओन पॉलिटिकल लीनिंग, आई कैन हैव माई ओन पॉइंट ऑफ व्यू, बट अगेन एज ए ब्यूरोक्रेट, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, आई नीड टू बी एज न्यूट्रल एंड एज प्रैक्टिकल एज आई कैन बी. उस पॉइंट ऑफ व्यू से द लेफ्ट हैंड साइड पेपर जो है, व्यू निकल के आता है. जनरली आपको अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है, you'll end up getting 1 or 2 odd marks, which is not favorable obviously. एंड आप जो राइट हैंड साइड पेपर में देखोगे, अगेन very neutral point of view, maintaining law and order is primary duty of state, therefore both central and state government needs to have a thin difference, या जो भी enforcement officers etc. नाउ इसमें भी द पर्सन हैज रिफ्लेक्टेड द सेम पॉइंट्स जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में बोले, बट अगेन जो टोन होता है, टोन इज इन द राइट डायरेक्शन. सो टोन हमेशा अपने आप को चेक कर में रखना है, और आपको कुछ कंट्रोवर्शियल इंफॉर्मेशन या कंट्रोवर्शियल बातें नहीं करनी है. Correct. Then I think the introduction which doesn't add any value. ये भी बहुत important अगेन या lines हाँ, तो अगर आप अगर ये कैन यू जस्ट जूम इट Yeah, थोड़ा. sure. More? या now the question is what B.R. Ambedkar, Dr. B.R. Ambedkar played multiple roles in his lifetime. Discuss these roles with examples. वही है. अब डॉक्टर बी आर, अब देखना यहाँ पे, नाउ आई एम गोइंग टू डीकंस्ट्रक्ट कि कैसे सुपरफ्लुअस वर्ड या फिर जो एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं विच इज नॉट एडिंग एनी काइंड ऑफ वैल्यू टू योर आंसर्स, वो चले जाते हैं. यहाँ पे बी आर अम्बेडकर, एन आइकॉनिक फिगर इन इंडियन हिस्ट्री. एन आइकॉनिक फिगर इन इंडियन हिस्ट्री, डू यू रियली थिंक दैट दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल विद एग्जामिनर? क्या जरूरत था उसको आइकॉनिक फिगर लिखने का? मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस, यहाँ तक देखो, यहाँ तक इट इज नॉट सर्विंग एनी पर्पस. Alongside his tireless effort to eradicate social caste-based discrimination, he actively participated to fight against British colonial rule. His unique perspective and relentless, again, advocacy that is not adding any kind of value for the right of marginalized communities left an indelible mark in freedom struggle history. अभी अगर इस पार्ट ऑफ को अगर मुझे कंसाइज करके लिखना था, आई वुड हैव रिटन कि अंबेडकर ने मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए कुछ कुछ काम किया है पॉजिटिवली, and ultimately fought against the British colonial rule. That two line would have served the whole purpose than writing those 7-8 lines का paragraph. That is not serving any kind of purpose. Secondly, आप अगर देखो directly यहाँ पे जो question है, being a social reform, the person has used educationist, economist, politician. Lifetime can be perceived from his own saying, political democracy is of little importance with social democracy. Now again, that person has used his own मतलब बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के कोट, बी आर अम्बेडकर के जो भी एडजेक्टिव्स थे या फिर जो भी उन्होंने काम करा था, दैट पर्सन हैज हाईलाइटेड कि रिफॉर्म्स भी कर रहे थे, एजुकेशन में भी थे, इकोनॉमिक्स में भी थे, एंड अल्टीमेटली that person has summarized. So obviously, as an examiner point of view, I would be preferring more the right side of him. Now, last blind yeah. spot, I think. Yeah. आपके Now flat again, वही वाला technology ही flower वाला example. yeah. If the question is say asking you A, B, and C, and you have ended up understanding only A part or only A and B, and then missing the C part, तो ऑब्वियसली एग्जामिनर को एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट जो होता है, एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन जो होना चाहिए, वो नहीं आएगा. देन अगेन आपको अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है, you'll end up getting 2 or 3 odd marks. अगर 15 मार्क का है, you'll end up getting 4 or 5 marks and not more than that. आपको डिमांड क्या है क्वेश्चन का वो समझना पड़ेगा, इम्प्लिसिट डिमांड क्या है वो समझना पड़ेगा, एंड देन अल्टीमेटली यू स्टार्ट
your answer by setting a context in the introduction itself, and then you go on addressing all the demands of the question. Now in this question also, ठीक है, यहाँ पे अगेन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट है. नाउ यहाँ पे ना कहीं वो तीन सब पार्ट है निकल के आ रहे हैं कि आपका क्या क्या ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट है. पहला लेजिस्लेचर है, दूसरा जुडिशरी है, तीसरा एग्जीक्यूटिव है. नाउ बैलेंस किसमें है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में, पहला किसमें बैलेंस होना चाहिए. ऑब्वियसली लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी में पहला बैलेंस होना चाहिए, दूसरा बैलेंस होता है एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर में, एंड तीसरा बैलेंस होता है एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में. नो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, स्टूडेंट्स एंड अप राइटिंग ओनली अबाउट एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. बस वो एक चीज को बता दिया, या फिर लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी. नाउ द स्टूडेंट इज नॉट टॉकिंग अबाउट से एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर का जो टसल होता है वो भी कहीं ना कहीं होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो सेकंड वाला पार्ट होता है वो मिसिंग हो जाता है, एंड द पीपल हैव एंडेड अप राइटिंग जस्ट टू पार्ट्स टू इट एंड देन एक्सप्लेनिंग द होल थिंग. नाउ जो तीसरा डिमांड ऑफ द क्वेश्चन था जो इम्प्लाइड था इसमें, दैट गोज मिसिंग, एंड अल्टीमेटली इफ आई हैव टू आई मीन evaluate the paper, I'll end up giving only 2 or 3 marks and not more than that, and in this copy I'll end up giving say 5 or 6 marks. तो वो आपको समझना पड़ेगा कि जो भी वट एवर यू आर राइटिंग, यू शुड बी एबल टू कैटर टू द डिमांड इन ऑल द सब पार्ट्स, एंड तभी you'll end up fetching good marks in your exams. Right. Now, And then Sumit, I think these are your copies. yeah, We can exactly. quickly glance them in Yeah, five sure. minutes. So where Exactly. he's hitting the bullseye, where he's not, he'll tell you, of course. सो आई हैव पुट इन ऑल द, मतलब जो मैंने दो तीन अच्छे आंसर्स मुझे लगे, और जो एक आध दो जो मुझे लगा कि हाँ मेरे में खुद में ही कमी थी, बिकॉज ऑब्वियसली कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो कमी रह जाती है. नाउ जो पहला वाला जो एग्जांपल है, दिस इज मोर अबाउट इलेक्शन कमीशन. आई स्टार्टेड विद अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, एंड अल्टीमेटली गिविंग अ कॉन्टेक्स्ट कि कैसे सीईसी एक्ट आया है 2023 में विथ एन आर्टिकल ऑफ 324. नाउ दिस इज डायरेक्टली catering to the demand of the question. This is directly hitting the bullseye कि जो क्वेश्चन में पूछा गया था. I have written the case law, I have written the act, I have written the article of the constitution. Now this is serving whole purpose जहाँ पे क्वेश्चन को समझा जा सकता है. Now in the second part also, आई थिंक वुमेन पार्ट इन स्टेम ग्रेजुएट के बारे में बोला जा रहा था, जहाँ वहीं पे मैंने स्टार्ट करा नीति आयोग की रिपोर्ट से, जहाँ पे आई हाईलाइटेड कि हाउ डिस्पाइट जो ग्रेजुएट्स होते हैं वुमेन में 43% होते हैं, बट उनका पार्टिसिपेशन होता है इट्स ओनली 14.3%. नाउ दैट इज डायरेक्टली हिटिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. दैट इज लाइक अ bullseye introduction. The moment if I'm using this kind of introduction, the चांसेस है कि एग्जामिनर विल गेट इम्प्रेस, और वहीं से फिर मेरा कॉपी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा, मेरा आंसर उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा. अब ना दूसरा मैं एग्जांपल बता रहा हूँ जहाँ पे आई थिंक वी कैन मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. तो दूसरा एग्जांपल में जहाँ पे या आई हैव यूज्ड, जैसे मुझे ज्यादा इसमें कुछ डाटा नहीं आ रही थी, तो द क्वेश्चन वाज अबाउट इंटरसेक्शन ऑफ एआई इन गवर्नेंस, एंड ऑब्वियसली मुझे कुछ उसमें डाटा नहीं थे, तो आई हैव स्टार्टेड विद एज पर नास्कॉम कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बिकम अ ग्राउंड ब्रेकिंग पाथ फॉर द ई गवर्नेंस इन इंडिया. नाउ अंडरस्टैंड कि this is a kind of, I'm paraphrasing the whole question in my introduction itself. Now it is not serving any kind of value to the question. और इसमें मुझे ऑब्वियसली मार्क्स भी कम आए थे, तो वो ना आपको समझना जरूरत होगा कि कैसे आपका इंट्रोडक्शन इट शुड बी हिटिंग डायरेक्टली एज अ बुलसाई, एंड जहां पे आप अवॉइड कर सकते हैं पैराफ्रेजिंग द होल क्वेश्चन और गिविंग कोटेशंस विदाउट गिविंग एनी कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, और यूजिंग एग्जांपल्स और डाटा which is unrelated to the question. The moment you have bifurcated and the moment you have understood these nuances, these differences, automatically आपका In contextual approach, Sumit. या अगेन इसमें भी जो मेरा लास्ट मेरे खुद के कॉपी के हैं, जहाँ पे इंडिया हैज बीन इन्वॉल्व इन सबका साथ सबका विकास in the whole Indo-Pacific theater and in the whole international events, जहाँ पे India's participation has improved. Now वहाँ पे the question is about this कि कैसे India's role has improved internationally, and I've started with the age-old ancient quotation about Vasudevaya Kutumbakam, जो हमारा पहले का quotation था, जो हमारा पहले का philosophy था कि whole world, the whole one earth is our family.
इंडिया अभी रिसेंट टाइम्स में वही तो कर रहा है. इंडिया इज बैलेंसिंग इट्स टाइज विद बोथ रशिया एंड से यूएसए. इंडिया इज बैलेंसिंग इट्स टाइज विद बोथ रशिया एंड यूक्रेन. चाइना को भी हैंडल कर रहा है, साथ साथ फिर यूरोपियन कंट्रीज के भी नीड्स एंड डिमांड्स को कैटर कर रहा है. तो इंडिया इज एक्चुअली प्लेइंग दैट विश्व गुरु का रोल, जहाँ पे वी आर फॉलोइंग आवर एज ओल्ड प्रिंसिपल ऑफ वसुधैव कुटुंबकम. नाउ आई हैव यूज्ड दैट कोटेशन अपफ्रंट इन द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ. दो एग्जामिनर को कहीं ना कहीं वो दिखाया कि ठीक है, आई हैव अंडरस्टूड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, आई हैव सेट द कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग इन माय इंट्रोडक्शन ओनली, एंड देन आई विल मूव फॉरवर्ड जहाँ पे आई विल बी एड्रेसिंग द सब पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन. Now this is the way forward जहाँ पे you can incorporate these uh, values to your answers. Automatically आपका introduction, body and conclusion improve हो जाएगा. Right. So again, we are reiterating, we are back on the same slide, that this is what you need to know. You have to master before you start answer writing, advanced level answer writing, and avoid those 8 blind spots. Fix those 8 blind spots. We just discussed each of them in great detail. उसके बाद ही आप जाके answer writing करिए. And this is exactly how your introduction should look like, how your body should look like, and how your conclusion should look like. Right? ट्राई करो कि ये वाला फॉर्मेट आपके पास रहे. Sumit, you want to explain this, or it's Yeah. understood? No, I'll just explain. Yeah. I'll just explain. I mean, add 2-3 points to it. Now, अभी जो पहले जो था, I think when I was starting preparation back in 2021-22, उस समय के पेपर्स में अगर आप देखोगे तो the people were not using examples after a point. कि whenever I used to look into the papers of toppers, so they were just point and point. Now a new trend has started, जहाँ पे the people have been using examples. Again, at the cost of reiteration, श्रुति शर्मा मैम के कॉपीज आप देख लेना, इसी तरह किशोर मैम के कॉपीज देख लेना, इवन जो अभी शक्ति दुबे टॉपर हुई हैं उनकी कॉपीज देख लेना, या फिर अगर आई थिंक मेरे भी कॉपीज एक आधो अवेलेबल होंगे ऑनलाइन में. नाउ वी हैव स्टार्टेड अ न्यू, मतलब द टॉपर्स हैव स्टार्टेड न्यू ट्रेंड, जहाँ पे पीपल are writing points and then example. Examples are used as a contextual understanding and also to substantiate the point which you have already made. The moment you are say using कि women के लिए violence बहुत बढ़ गया है, it shows the patriarchal nature of the society, and then you are substantiating your point with say NCRB data कि as per NCRB 2021 report 10.1% of violence against women has increased significantly, and this shows how patriarchal mindset has been increasing. नाउ योर जो एग्जाम्पल है या फिर वो जो डाटा था, इट इज अल्टीमेटली सब्सटेंशिएटिंग द पॉइंट विच यू हैव ऑलरेडी मेड. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ना दिस एग्जाम्पल गेम आपको समझना पड़ेगा. इंट्रोडक्शन वही रहेगा, सेटिंग द कॉन्टेक्स्ट. बॉडी में यू कैन डिवाइड योर बॉडी इन 2-3 सब पार्ट्स एंड देन मूव फॉरवर्ड विद डायग्राम एंड देन अल्टीमेटली फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन दे करके आप सुटेबली कंक्लूड कर दो. बस यही था.